welcome to all here in the session of mathematics. This is the 11th episode for the chapter vector algebra for plus 2 second year science students. In the 10th episode, we have discussed the scalar triple product, what is the geometrical interpretation, and what are the properties of the scalar triple product. Also, we have done up to number 4 of exercise 12D. Now we'll start the exercise 12D from the number 5. Before going to the number 5, first of all, I recall your memory. That is, if the three vectors A vector is equal to A1 I cap plus A2 j cap plus A3 k cap and B vector is equal to B1 I cap plus B2 j cap plus B3 k cap and C vector is equal to C1 I cap plus C2 j cap plus C3 k cap. Then the scalar triple product denoted by the symbol A vector, B vector, C vector inside the square bracket, that is nothing but the A vector dot B cross C. Some students first finding B cross C then dot product with A vector niyanti, किंतु तुम्हें डायरेक्ट एटा लिखि पारिबो. This one can be written as in the determinant style, that is first vector is A vector, that's why A1 A2 A3 in the first row, B1 B2 B3 in the second row, since B is the second vector and C is the third vector, that's why C1 C2 and C3 is the third row. We have to find the determinant of this. Okay, so finding the determinant of this, we can find the scalar triple product. Okay, again gote note sikithila, some properties re sikithila, jodi if two vectors are equal, jodi dita vector equal he jauchi, tale scalar triple product is equal to 0. Suppose A vector C is equal to 0. Two vectors are equal, any two vectors, suppose A dita equal भी अच्छी, तल भी 0 हम तांकर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आउ लिखिबा बाहर करिबा दरकार नाही. ओके, बाहर कले भी देखिबो तुमे डिटरमिनेंट स्टाइल बाहर कले 0 होबो. आउ कोन हेले 0 होबो ना पैरेलल हेले दीटा वेक्टर एनी टू वेक्टर्स पैरेलल हे गले मध्य 0 हे जिवो. तापर प्रॉपर्टीज रे पडिथिला कोन ना कोप्लानर. केते बेले कोप्लानर होबो ना जदी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हुए A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर तांकर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 if and only means vice versa is also true, that is A vector B vector C vector are coplanar. मन अछि ना नहीं, coplanar पाई भी a condition applicable, that is scalar triple product जति 0 होला, three vectors are coplanar होला, then the scalar triple product is also 0. So now we'll take number 5. Okay, read the question first, that is number 5. You have to ask, find the value of lambda so that the three vectors are coplanar. That means I'm writing here, find the values of lambda so that the three vectors are given, that is I cap plus 2j cap plus 3 k cap and 4 I cap plus j cap, 4 I cap plus j cap plus lambda k cap. Lambda is there, involves inside the vector, and third vector is lambda I cap minus 4 j cap plus k cap are coplanar. That means you have to find the value of lambda, unknown is lambda, so that the three vectors this are coplanar. Now we know that from the previous episode already we have been discussed, if the three vectors are coplanar then their scalar triple product is equal to 0, isn't it? So therefore now we'll take the solution. Given three vectors, first you name it, given three vectors are suppose A vector, named it by A vector, that is I cap plus 2j cap plus 3k cap, and B vector is equal to
4 I cap plus j cap plus lambda k cap, and c vector is equal to lambda I cap minus 4 j cap plus k cap. These are all given condition. Again, you should write again, given that the three vectors are coplanar. The three vectors are coplanar. That means what? The scalar triple product of this a vector, b vector and c vector, scalar triple product of this is equal to 0. Scalar triple product means the determinant. Okay, that is the determinant of first vector a vector 1 1 2 3. This components of ith component, jth component and kth component, that is I ro coefficient, j ro coefficient, k ro coefficient. Same the b ro coefficient, I ro coefficient kete hoche 4, this one is 1 and this one is lambda. So 4 1 lambda should be at the second row, 4 1 lambda. Then c vector coefficient, ith coefficient lambda, jth coefficient minus 4, kth coefficient is 1, that is lambda minus 4 and 1. So determinant of this, we have to find the determinant of this is equal to 0, taking this 0 because already given these are, they are coplanar. So that implies 1 whole into 1 plus 4 lambda minus 2 whole into 4 into 1, that is 4 minus lambda into lambda, that is 4 minus lambda square, plus 3 into that is 4 into minus 4, 1 into lambda, 4 into minus 4, that is minus 16 minus lambda is equal to 0. Determinant बाहर करिए, समझ जानी चाहिए. Simple multiplication, that is 4 lambda plus 1 minus 8 plus 2 lambda square minus 48 minus 3 lambda is equal to 0. This is nothing but the 2 lambda square गोटे quadratic equation बाहरियो, lambda दीटा value बाहरियो, 2 lambda square 4 lambda minus 3 lambda, that is plus lambda minus 8 minus 48 minus 56, এটা লাগে 55 minus 55 is equal to 0. middle term factorization पके दिया, middle term factorization रे कोन आछि, एटी 2 अछि, एटी minus 55, so 110 को भांगिले 11 into 10, isn't it? So 2 lambda square plus 11 lambda minus 10 lambda minus 55 is equal to 0, or in other words, taking lambda as common, we are left with 2 lambda plus 11 minus 5 taking as common, that is 2 lambda plus 11 is equal to 0. Now we'll get 2 lambda plus 11 whole into lambda minus 5 is equal to 0. So this is nothing but the 2 lambda plus 11 is equal to 0, or lambda minus 5 is equal to 0. So lambda is equal to minus 11 by 2 and lambda is equal to 5. So for the values of lambda 5 and minus 11 by 2, so you can write hence the value of lambda is equal to 5 and minus 11 by 2, for which the given three vectors are coplanar. The given three vectors are coplanar. Now we'll take the number 6. Number 5 bit 2 तुम निजे निजे कर परिबो. Number 5 रो bit 2 पूरा ठीक सही टाइप रो छी. lambda रो वैल्यू बाहर करिवा. 6 of exercise 12D. If a vector, b vector and c vector are mutually perpendicular, then
so that a vector b vector c vector scalar triple product square is equal to a square b square c square. You have to prove if a vector b vector and c vector are mutually perpendicular, then the scalar triple product of a vector b vector and c vector the whole square is equal to a square b square and c square. That is a dot b cross c whole square. That means what? A vector dot b cross c total whole square is equal to a square b square c square. Same question. A vector dot b cross c माने scalar triple product of a b c. Okay, given what? Mutually perpendicular. Mutually perpendicular हेले हमको प्रूव करिया पड़िबो abc रो scalar triple product the whole square is equal to a square b square c square. Now we'll take the solution. First we'll write the given condition. Given a vector b vector and c vector are mutually perpendicular. Okay, mutually perpendicular. मु symbol लिखुची तमे पूरा लिखियो sentence लिखियो mutually perpendicular. That implies a vector perpendicular to b vector, b vector is also perpendicular to c vector, and a vector is also perpendicular to c vector. That means the angle between them is 90 degree. Okay, so you can find the b cross c. B cross c means b vector cross c vector. Why b cross c हमें find करचु ना b cross c find करियार अछि scalar triple product रे first. So b cross c means what? B vector of magnitude c vector of magnitude into तांके भीतर angle केते suppose theta into n cap मन अछि ना नहीं according to the definition of the cross product or vector product between the two vectors. If the angle between b and c is theta, where theta is the angle between, where like per theta be the angle between b vector and c vector, which is equal to kate degree? 90 degree, or you can write pi by 2. So that is nothing but the b vector magnitude small b, c vector magnitude small c, sin pi by 2. अच्छा n cap टा कौन कहलो? n cap is the unit vector perpendicular to the plane containing both b and c, both b vector and c vector. माने definition to n cap is the unit vector. Suppose एटा गोटे plane हला, एटा गोटे plane, suppose एटा गोटे plane अछि, एटा को perpendicular जे अछि सेटा suppose n cap तार magnitude होइतिबो केते 1, त माने एटा perpendicular हला बुझि पाइला. So now this is nothing but the bc sin 90 degree is 1 into n cap. So that is nothing but the bc into n cap. Okay, that is b cross c. Now we'll take a dot b cross c, that is scalar triple product a b c means what? A dot b cross c. Already we have found b cross c is equal to how much? bc n cap, that is a vector dot bc n cap. Okay, now you see a vector, eta bc ta kon? bc ta hoche scalar, that's why outside the vector product, that is a vector dot n cap. So what about the a vector and n cap? It देखो এটা suppose b vector, এটা suppose c vector, b vector c vector हले এটা n cap हला. Given condition रे कोन अछि? a vector is perpendicular to b vector, a vector is also perpendicular to c vector. ता माने कोन? a vector perpendicular to b vector as well as c vector. ता माने कोन? ता माने bc जो plane रे अछि, suppose এটা हला c vector, এটা हला b vector. bc जो plane, bc भी perpendicular, ता माने bc जो plane रे अछि सेही plane को भी a vector is perpendicular. ताले a vector आउ n cap आउ a vector कोन हेबे? पैरेलल हेबे ना नहीं?
କାରଣ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ perpendicular to the plane containing b vector and c vector, that's why they are parallel ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ angle ଟା କେତେ ହେବ 0 degree. So therefore you can write here that is nothing but the bc keep it as n a vector dot n vector, ତା ମାନେ a vector magnitude n cap ro magnitude and angle between them cos dot product ro नियम अनुसार definition of the dot product कोन हबो cos हबो, cos angle between them is 0 degree, that's why cos 0 degree. It लिखिबो since n cap parallel to a vector, that's why angle between them is 0 degree. Okay, so that is nothing but the bc n cap a vector magnitude kete a n cap magnitude kete 1, so abc that is nothing but the abc. Now you have to ask the scalar triple product square, that is a vector b vector c vector scalar triple product square is equal to abc whole square. We have just found the scalar triple product is abc, so abc whole square kete a square b square c square, so proved. Okay, बुझी पाइला समझते या थरे रिकॉल कर दियो कौन क्वेश्चन देथिला, क्वेश्चन देथिला if a vector b vector c vector are mutually perpendicular बुझी पल्लो, mutually perpendicular माने कौन, a vector perpendicular to b vector, a vector perpendicular to c vector, b vector perpendicular to c vector, then show that a vector b vector c vector रो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रो स्क्वायर होची a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, एटा प्रूव करियो बा a डॉट b क्रॉस c रो स्क्वायर होची a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. अच्छा हमर दरकार कोन ताले b क्रॉस c, फर्स्ट b क्रॉस c फाइंड कर दो. फर्स्ट गिवन कंडीशन लगाला a b c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट पाने लिखि दबो a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर ता भीतर एंगल 90 डिग्री, b वेक्टर परपेंडिकुलर टू c वेक्टर ताके भीतर एंगल 90 डिग्री, a वेक्टर परपेंडिकुलर टू c वेक्टर ताके भीतर एंगल भी 90 डिग्री. सो देयरफॉर फर्स्ट यू विल फाइंड b cross c, it like the now first you will find b cross c, b vector magnitude c vector magnitude cross product vector product रे sin theta हुए. What is theta? Theta is the angle between b and c भितर perpendicular मान 90 degree, so it pi by 2 put हला, pi by 2 माने केते 1. अच्छा तांको भितर n cap, what is n cap? According to the definition of vector product गोटे n cap unit vector multiply हबो, ताले unit vector टा कोन, unit vector is the perpendicular to the plane containing b vector as well as c vector नहीं का. सो n cap हला इठी गोटे वेक्टर गोटे प्लेन कर दलो ताकू n cap नेला परपेंडिकुलर. ओके, and theta be the angle between b and c, that is equal to 90 degree or pi by 2, and n cap is the unit vector perpendicular to the plane containing both b vector and c vector. Okay, now I will take that is bc b vector magnitude b, c vector magnitude c, sin pi by 2 हला 1 n cap, so bc n cap हे गला कोन b vector cross c vector. Now we have to ask a dot b cross c, that means abc रो scalar triple product is equal to a dot b cross c. ताले a dot b cross c जगह already we have found this one, that is bc n cap. so bc n cap पुट हे गला, bc n cap पुट हे गला परे तापरे bc टा स्केलर, एटी देखो bc टा होची कोन पूरा स्केलर, so outside bc टा को outside रख दल, तापरे डॉट प्रोडक्ट करनला a वेक्टर और n cap, so डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर, दीटा वेक्टर की गोटे a वेक्टर और गोटे यूनिट वेक्टर n cap. अच्छा a वेक्टर n वेक्टर भीतर एंगल दरकार कारण डेफिनेशन अनुसार कोन a वेक्टर मैग्नीट्यूड n वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड n वेक्टर. अच्छा a वेक्टर टा कोन होची, a वेक्टर टा होची परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, दैट मींस b वेक्टर को भी परपेंडिकुलर और c वेक्टर को भी परपेंडिकुलर, की सी ना a वेक्टर हला, इटा हला bc भी निज भीतर परपेंडिकुलर नहीं कौन. अच्छा a वेक्टर भी bc को परपेंडिकुलर. अच्छा n कैप टा कौन ना, n कैप टा होची यूनिट वेक्टर पर तामन ता मैग्नीट्यूड 1 किंतु परपेंडिकुलर टू काकू प्लेन कंटेनिंग बोथ b वेक्टर एंड c वेक्टर, ता माने n कैप आउ a वेक्टर दी जन जा कोन हे पैरेलल दे जे, सो दैट पैरेलल माने तांको भीतर एंगल केते 0 डिग्री, सो 0 डिग्री हला माने प्रूव हे गला केते cos 0 इज इक्वल टू 1. सो bc a वेक्टर मैग्नीट्यूड a, n वेक्टर जेतु से यूनिट वेक्टर ता मैग्नीट्यूड 1, सो bca और abc तांकर होल स्क्वायर पचातला, होल स्क्वायर प्रूव करियो देथिला abc रो होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. ओके, प्रूव. नाउ विल टेक अनदर नंबर, that is number 7. That is to prove, you have to prove that or show that
A plus B vector, B plus C vector, C plus A vector, scalar triple product is equal to twice of A vector, B vector and C vector, the scalar triple product. You have to prove this one. Okay, now we'll take the proof. This one is very important proof. बहुत गुड़े council exam board examination में पढ़ी छी. Very important. बारंबार कहूँ छी. देखो carefully. That is, you will take LHS. LHS is equal to how much? A plus B vector, B plus C vector, C plus A vector scalar triple product. So scalar triple product रो जहाँ नियम अच्छी पका. That is A vector plus B vector dot B plus C vector cross C plus A vector. नहीं कौन? According to the rule of A, B, C. The scalar triple product कहते हैं A dot B cross C. Okay, that is nothing but the simple multiplication करो. A plus B vector dot. It is simple multiplication करो. That is B cross C plus A vector plus distributive law पका C vector cross C plus A vector. By distributive law लिख दो. By distributive law that is A vector plus B vector. This is nothing but the B cross C vector plus B cross A vector, again by distributive law. C cross C vector plus C cross A vector. अच्छा, सेम वेक्टर थिले तार क्रॉस प्रोडक्ट केते हुए 0. सो दिस वन इज 0. सो हमर एठी डॉट अछि. सो डॉट प्रोडक्ट तापर नबा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डॉट प्रोडक्ट पका A डॉट B क्रॉस C. A डॉट सब गुडा तमाने A डॉट B क्रॉस C. A संगे आगो डॉट प्रोडक्ट. A संगे सब गुडा डॉट प्रोडक्ट करे. A डॉट B क्रॉस C प्लस A डॉट B क्रॉस A. बुझ परछ ना नहीं? A सहित एटा नबा, A सहित एटा नबा, A सहित एटा नबा प्लस A डॉट C क्रॉस A प्लस B सहित पुन नबा, B सहित सब गुडा नबा प्लस B वेक्टर डॉट B क्रॉस C. बुझी पाइल? प्लस B डॉट B क्रॉस A प्लस B dot C cross A. Okay, now just we have found this one is nothing but the A dot B cross C माने कौन? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C. You can write likewise स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस A dot B cross A. देखो दीटा वेक्टर इक्वल अच्छी. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट टू वेक्टर्स आर इक्वल. A B A टू वेक्टर्स इक्वल थिले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हुए. नेक्स्ट है सेमती A C A. देखो से प्रॉपर्टीज गुड़ा बहुत साहाय्य करिवो. प्रॉपर्टीज मन रखिवो B B C. नेक्स्ट वन दिस वन B B C. तापरटा कोन अछि B B A B B A सबरो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस B डॉट C क्रॉस A माने B C A साइक्लिक ऑर्डर अछि. ओके, तो बर्तमान कोटा कोटा 0 हला देखि दियो. जोटा जो थिरे देखियो एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल. दिस वन इज 0 सिंस टू वेक्टर्स आर इक्वल. दिस वन बी आल्सो 0. दिस वन इज आल्सो 0. दिस वन इज आल्सो 0. So therefore we have left with only A vector, B vector, C vector scalar triple product plus eta BCA. BCA means A B C properties रे पढ़थिलो cyclic order रे थिले. They are same values. So this is nothing but the twice of A vector, B vector and C vector.
so which is equal to RHS, hence proved. बुझी पाइल केमती कराला आउथरे टिके देखि दियो तुम प्रूव करिया कोन देइतला a plus b plus c plus a the scalar triple product is equal to twice of a vector b vector c vector. So देखो तुम नेलो scalar triple product of a plus b plus c plus a फॉर्मूला कौन ए बी सी रो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थिले फॉर्मूला कौन कहे ए डॉट बी क्रॉस सी ताले ए टा जगह ए प्लस बी अछि सेटा डॉट बी जगह बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए एटा क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लो पके बी क्रॉस सी प्लस ए सी क्रॉस सी प्लस ए बी क्रॉस ए एठी पके दबो सी क्रॉस ए सब गुडा पके देलो सी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 काई सेम वेक्टर थिले तांको भीतर एंगल टा 0 sin 0 0 दैट्स व्हाई सेम वेक्टर और वेक्टर प्रोडक्ट 0 आगु जानिछ प्रीवियस एपिसोड रे करछ. सो a plus b केबटा सेम ताले b क्रॉस ए c क्रॉस ए ताले a सहित डॉट प्रोडक्ट नबो a डॉट b क्रॉस c फर्स्ट नलो a डॉट b क्रॉस a नलो a डॉट c क्रॉस a नलो देखो तीनटा को नियाइछ फर्स्ट टा सेकंड टा थर्ड टा सेम दी b संगे नबो b संगे b क्रॉस c b संगे b क्रॉस a b संगे c क्रॉस a. अच्छा या माने कौन ए बी सी रो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या माने ए बी ए रो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या माने एस सी ए रो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या माने बी बी सी माने बी बी सी रो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ता माने तापरटा माने बी बी ए रो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तापरे बी सी ए रो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. सो देयरफॉर जोटी देखिबो एनी टू वेक्टर्स आर इक्वल इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देयर वैल्यू इज 0. सो देयरफॉर एगुडा सब 0 हो गला ओनली फर्स्ट टा एंड लास्ट वी हैव लेफ्ट विथ फर्स्ट वन लास्ट वन. फर्स्ट वन रे कोन अछि ए बी सी लास्ट वन रे कोन अछि BCA साइक्लिक ऑर्डर थिले ताको ABC लिख परिबो. सो ABC इज इक्वल BCA इज इक्वल CAB कारण साइक्लिक ऑर्डर बुझेइथिली प्रीवियस एपिसोड रे जो मन देखिना प्रीवियस एपिसोड देखिबा उथरे. सो ट्वाइस ऑफ ABC वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ओके सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. इन द नेक्स्ट एपिसोड we'll take vector triple product. Okay, so until then, goodbye.